Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan and today we're going to talk about 30 days to IFT. Around about 27-28 days बाकी है IFT के लिए and it's one of the fabulous exam. ये एक ऐसे exam है जो आपको इंडिया के top 10 B स्कूल को access दे सकती है, which is definitely IFT Delhi. टॉप 30 में IFT कैलकाटा शॉट आएगा. सो यार इट्स अ गुड एग्जाम. अगर आप टॉप 10 में जाना चाहते हो, अगर आप टॉप 25 में भी जाना चाहते हो, सो डेफिनेटली IFT इज एन एग्जाम दैट यू कैन कंसीडर. पहले क्या होता था, IFT एक्चुअली पहले 7 दिन के बाद होता था कैट होने के बाद, एंड दैट इज द रीजन लॉट ऑफ पीपल वर नॉट रियली कीन ऑन गिविंग द एग्जाम एंड दे वुड फील दैट कि यार मेरा पढ़ाई शायद से होगा नहीं एंड आई विल बी काइंड ऑफ अवे फ्रॉम माय एग्जाम और समथिंग लाइक दैट. तो मेरे ख्याल से वो एक्चुअली इस बारी नहीं होगा बिकॉज यू हैव 27-28 डेज इवन फ्रॉम टुडे इफ यू कैलकुलेट. मेरे ख्याल से 27-28 डेज काफी होता है IFT के प्रिपेयर करने के लिए और उसको फोड़ने के लिए मेरे ख्याल से. सो गाइस आई एम गोना वॉक यू थ्रू द एंटायर IFT का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इन दिस वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. पहली बात, टॉप 10 में क्यों? पहली बात, IFT दिल्ली का क्लोज कंपटीशन हो सकता है JBIMS के साथ, माइका के साथ, MDI गुड़गांव के साथ, बट मेरे ख्याल से MDI गुड़गांव फिर भी थोड़ा सा कीप इट अप. अगर मैं IFT को देखूंगा तो अगेन आई मीन लाइक अगेन अगर मैं बात करूं MD IFT इज समथिंग आई विल काइंड ऑफ पुट इट एट द सेम लेवल. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल लॉट ऑफ टाइम थिंक अबाउट कि मैं IFT करूं या मैं जमनालाल बजाज करूं, बिकॉज अभी वही फंडा होगा. बिकॉज IFT आपकी 24 जनवरी को है, एट मार्च में आपका CET एग्जाम है. सो यार अगर हम देखेंगे एग्जाम लेवल पे अगर हम बात करेंगे, सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है IFT इज वेरी मच डुएबल बिकॉज IFT प्रेडिक्टेबल है, ज्यादा तामझाम होता नहीं है IFT का. कट ऑफ का जो रिक्वायरमेंट है IFT का वो कम होता है कंपेयर्ड विद CET. एंड CET में मेरे ख्याल से एक ही बी स्कूल है जो एक्चुअल में वर्थ है जाने के लिए, विच इज जमनालाल बजाज. उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है. और अगर हम बात करेंगे IFT के लिए तो मेरे ख्याल से IFT दिल्ली एंड IFT कैलकाटा, ये दो ऑप्शंस आपके पास है. अगेन द प्लेसमेंट्स आर कॉमन, सो इट डजंट रियली मैटर वेदर यू आर फ्रॉम IFT कैलकाटा और यू फ्रॉम IFT दिल्ली बिकॉज यू हैव अ सेम प्लेसमेंट एक्सेस. ऐसा JBIMS में नहीं है, देयर इज ओनली वन कैंपस. एंड कंपटीशन को देखा जाएगा तो JB हैज लॉट ऑफ कंपटीशन. उसके चलते IFT एग्जाम इज प्रीटी बेटर. नाउ बात करेंगे अगर हम कॉलेज के बारे में, एनी टाइम आई कैन पुट IFT दिल्ली ओवर एंड अबव जमनालाल बजाज कंसिडरिंग कपल ऑफ फैक्टर्स. कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 321 बच्चे हैं जो IFT प्लेस करता है और फिर भी उसका एवरेज पैकेज JBIMS के इतना है. सो दैट इज नंबर 1. Number 2, looking at the students' quality, looking at the peer quality, looking at the alumni base, looking at the profiles, looking at the international placements, the quality of jobs, the companies who are coming on the campus, considering all, and again, the international exposure also, because even that is something which is important because of the globalization now. तो यार ये सब चीजें अगर आप कंसिडर करते हो तो मेरे ख्याल से IFT, I think it's a clean sweep for IFT. The only thing that I would kind of go or rather talk in favor of JBIMS, no doubt it's a phenomenal college. It's the best college in the country. Finance के लिए one should be quite keen on JBIMS compared with IFT. And मेरे ख्याल से IFT इतना बेकार है नहीं, 19-20 का फर्क है JB में और IFT में as far as finance is concerned. दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो ROI में JBIMS has a clean sweep. There is no doubt about it. It's a one-sided game for JBIMS because their fees is just 6 lakhs. Now, looking at the couple of factors, right? Let's look at the placement because this is something you guys will be more interested in looking at, right? So अगर हम बात करेंगे highest salary की, so यार your highest international salary is around about 75 lakhs. Okay, I can talk a lot about the profiles, but I think probably I'll do a different video about it. Average CTC is around about 20 and a half lakh. But अगर हम मीडियन भी देखें तो भी वो 19 lakhs के तकरीबन है, which is not that bad. It's a decent number. अगर आप एवरेज टॉप 100 बच्चे हो, वहाँ 321 बच्चे हैं ना, अगर मैं 100 भी पकड़ू तो भी अगर मैं 1/3 में भी अगर आप आते हो मेहनत करके तो भी यार you can actually go for this, right? I think that's not a bad number at all. 29 lakhs for average 100 students. I think that's a really good amount. 46.5 lakh is what the domestic highest salary, which is the Indian salary that they're talking about. That's the reason I say that it's a commendable job यार. 321 बच्चा लोग प्लेस करने के बाद भी if you're able to bang average of 18.5, I think that's a commendable job. International placement is what you also need to look out for. Placements are pretty good. यहाँ पे PPOs वगैरह भी अच्छे मिले हैं. मेरे ख्याल से ये 46 लाख जो है, maybe I'm not sure, this might have come from Microsoft because I kind of heard about it saying that कि यार इसने PPO दिया है IFT में इस बारी. So I hope ये news सही हो, but again I'm not going to give you a lot of exposure towards it. But yeah, the companies are going to be really awesome over here. So यार you just understood the placement का stats और मेरे ख्याल से ये बनता है कि आप एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो. Look at this number, 93% of the बच्चा लोग, rather 93 students of IFT has got
द पीपीओ, राइट? अगर मैं बात करूं 300 बचा, राइट? सो अगर हम देखेंगे राउंड अबाउट 25 से लेके 30% बच्चों को पीपीओ मिला है. दैट्स अ ब्लडी गुड नंबर, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का December 6. तो अगर आप चाहते हो आप एक्चुअली इसको एनरोल कर सकते हो. रादर यू कैन फिल द फॉर्म. ये एग्जाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है. It's a simple exam compared to CET and ZAT and all. CMAT के लेवल पे आप थोड़ा पकड़ सकते हो, no doubt about it. So मेरे ख्याल से it's a good exam. The result to be announced by January 30. This is pretty quick. Application fees is around about 2,500. Admit cards will be available. This is a little wrong. Your exam date is actually Jan 24th, right? So this is about the exam. Let's move ahead and let's talk about what needs to be done to crack this exam. Let's talk about the sections. Normal section 4 सेक्शन है. IFT थोड़ा सा weird हो जाता है कभी कभी. लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इन लोगों ने 6 सेक्शंस बनाए थे. VA अलग, RC अलग, जनरल अवेयरनेस अलग, DI अलग, LR अलग एंड क्वांट्स अलग, और हर एक का सेक्शन कट ऑफ था. सो विल टॉक अबाउट दिस. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 110. ये अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी अराउंड अबाउट 110. सो यहाँ पे ये नंबर हमें दिख रहा है, राइट? Total number of marks for this exam are nothing but 300. Okay, इसका होता है differential marking system. मतलब हर एक क्वेश्चन का मार्किंग सिस्टम सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, राइट? सो that's about it is. QA आपने करा है, आपको आता है QA, आपको आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी हमने अभी तक करा होगा. वी आर इन द मंथ ऑफ December, क्लोज बाय. अभी तक तो ये किया ही होगा. जनरल अवेयरनेस, आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तब आपको ये शायद से काम आएगा. Scoring pattern 1.5 marks. This is for GK, by the way. 3 marks each for other questions. Sometimes again subject to change. It's a disclaimer. 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है. ZAT जैसा नहीं है यहाँ पे कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो नेगेटिव मिलेगा, क्वेश्चन छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. And yeah, sectional cutoffs are important. So you got to clear sectional cutoff. That's something which is important out here. Let's understand number of questions. VARC, verbal ability and reading comprehension, will have around about 35 questions. It's a decent number. 3 marks is total marks are going to be 105. QA के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन. Marks awarded 3 each question. Total is going to be 75. DI and LR total is going to be 90 with 30 questions in here. General knowledge matter करता है. Sectional cutoff clear करना जरूरी है. We'll talk about sectional cutoff also. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 110 क्वेश्चन आपके हैं. Maximum weightage किसको दिया जाता है? VARC. Again, needless to say, VARC is going to be the game changer. मैं always कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑलवेज कहता हूँ VARC इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, बट हाँ, जो एग्जाम्स में मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर है, मैं ऑलवेज बच्चों को कहता हूँ कि यार इस पे थोड़ा ध्यान रखो. सो VARC इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे कुछ नया नहीं है जो आपको पढ़ना है. दिस इज समथिंग वी हैव बीन स्टडीइंग. वी हैव डन दिस फॉर अ कपल ऑफ थिंग्स. वी हैव डन फॉर CAT एज फार एज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न. कपल ऑफ थिंग्स वी बीन डूइंग फॉर SNAP, for NMAT, for ZAT, which is nothing but idioms, punctuation, grammar, analogy, parajumbles, para completion, figure of speech. If you are a CDC mentors का student or if you want to enroll with us, you can definitely look out for all the grammar videos that we have. उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मेरे रूल्स है, जो मेरी स्ट्रैटेजीज है, that should be more than enough for you to actually nail VARC. अगर हम बात करेंगे IFT के क्वांट्स के बारे में, it's a clear cut thing guys. Arithmetic is going to be dominating thing. So again, IFT is also going to be driven or dominated by the arithmetic, followed by geometry and algebra, and थोड़ा बहुत modern maths, predominantly PNC and probability. तो ये करना जरूरी है. नंबर्स अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो. क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे आते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं. लेवल ऑफ डिफिकल्टी CAT से कम होगी, ZAT से कम होगी. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक अ कॉल कि यार मुझे कौन सा क्वेश्चन उठाना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है. 2 घंटे का एग्जाम है एंड दैट इज द रीजन इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा स्पीड मेंटेन कैसे कर पाओगे. दैट्स अबाउट योर क्वांट्स. ये सब चीजें आपने करी है. देयर इज नथिंग न्यू. डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत क्लमसी बन जाता है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड बन जाता है, एंड दैट इज द रीजन लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल इन दिस एरिया. सो अगेन, कैलकुलेशंस अगर आपके आते हैं, इफ यू आर प्रीटी गुड विद द स्पीड मैथ्स, यू शुड बी एबल टू नॉक दिस आउट. लॉजिकल रीजनिंग सेम है भाई, सेम है. स्टेटमेंट कंक्लूजन है, टीम बेस्ड क्वेश्चंस है, पजल्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शन, all these things you have done earlier. So there is no different thing that you have to do. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कुछ अलग करना है टू क्रैक IFT. इसकी LOD मीडियम लेवल पे आती है, एग्जाम इजी टू मीडियम लेवल पे चलती है. थोड़ा बहुत आपको हिकअप्स आएंगे. जहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाता है.
और यहाँ पे पजल जो है वो शायद से आपको थोड़ा प्रॉब्लम करे विद रिस्पेक्ट टू डीआई। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक डीआई इजी आएगा, मीडियम लेवल के डीआई आने वाले हैं डेफिनेटली, बट यू नो दैट्स हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स, राइट? कि which DI you should be picking up and which DI you should not be picking up is something you have to take that call on the D-Day. अगर आप मेरी bucketing strategy यहाँ पे अप्लाई करोगे, you should be fine. You should be able to do it nicely. जीके के बारे में बात करेंगे तो मेरे ख्याल से it's going to be straightforward. Starting and current affairs का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन रहता है, बट वही पुराने जो चल रहे क्वेश्चंस वही आते हैं मोस्टली, पर्सनैलिटीज, करेंसी, कैपिटल, पर्सनैलिटीज अगेन जो ज्यादा करंट अफेयर में आ चुके हैं पिछले एक साल में, जिन पर्सनैलिटीज के बारे में ज्यादा बात हुई है उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। बट अगेन दिस इज समथिंग यू कैन स्टिल टेक केयर ऑफ. We have uploaded a lot of PDFs on the portal. If you do those PDFs, you should be sorted as far as your GK concerned. But इसकी कट ऑफ बहुत कम होती है. I'll just quickly show you the cut off. GK के बारे में अगर आप बात करेंगे 5 questions. 5 questions. Rather अगर हम 1.5 इसका मार्किंग सिस्टम है, राइट? तो यार राउंड अबाउट 5 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. ये कट ऑफ क्लियर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है. अगर आप देखोगे IFT दिल्ली के लिए जो सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे वो है, तो इसके 2 कट ऑफ होते हैं यार. एक तो 138 was the last year cutoff. That was overall cutoff. So you have to clear overall cutoff and the sectional cutoff. Most of the time it happens that students clear sectional cutoff, not overall. Sometimes they do clear overall cutoff, but not the sectional. Maybe one of the section, right? So this is the cutoff going to be 34, 15, 22, 5. Again, sir, हमें इतना ही देखना है sectional cutoff clear करने के लिए. Again, IFT थोड़ा सा सरप्राइज आपको दे सकता है. We don't know इस बार लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आएगा. We don't know इस बार वो क्या क्या सेक्शनल कट ऑफ लेके आने वाले हैं. So we have no idea about that. तो मेरे ख्याल से I think sections will remain the same. They'll not come up with again 6 section and having 6 cut off जैसे उन्होंने पहले करा था. मुझे नहीं लगता they'll do that. I think they'll keep it like 4 only. But then again the cut off will vary based on the level of difficulty. So उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Right, so that's the cutoff for 138 for general. EW is going to be around about 115. SC/ST is going to be around 89, 90. अगर हम लास्ट ईयर के बारे में बात करेंगे तो I think the more or less it's going to be the same this year also. Moving ahead, if I show you the overall cutoff for IFT Delhi 138, IFT Kolkata should be 125 is a good number to fetch a call. Alright, so last but not the least, I'm launching this program which is the IFT Crash Course ka program. We're launching this from tomorrow. You can join if you want to join us. And the best thing is that you can actually watch videos on mobile app. C2C का जो app है mobile app वहाँ पे भी, and even on the website. Now this program is going to be a combination of live lectures. Around about 80 to 85% live lectures होंगे and round about like 10 to 15% recorded videos होंगे. So there will be live lecture for DI, Quants, logical reasoning, reading comprehension, verbal ability. So all the sections we will be covering under the live lecture. For GK you will be getting all the handouts from our side and all the PDF documents from our side, along with couple of videos जहाँ पे हम छोटा मोटा शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताएंगे, एक स्ट्रैटेजी बताएंगे कि यार कम समय में ज्यादा जीके आप कैसे कर सकते हो. Along with that, there will be doubt solving session for IFT का बच्चा लोग. Also, what I am going to do for this year, my strategy is we will be conducting live lectures जहाँ पे हम actual IFT के papers solve करके दिखाएंगे. So you will be able to see round about 5 to 6 years का हमने IFT के questions जो भी थे important वो हमने कर लिए. मेरे ख्याल से वो एक बहुत सही बात होगी to kind of give you a little bit of polish thing towards your IFT preparation. तो वो एक अच्छी चीज है. प्लस इस बारी मैंने 4 वर्कशॉप्स इंक्लूड करे हैं IFT के प्रोग्राम में. So we will be doing IFT workshop 1, 2, 3, 4 towards the end of the program. So after 15th of January तब तक हम अच्छा खासा पोर्शन कवर कर सकेंगे. And lectures will be there will be around about 2 to 3 lectures. Bare minimum 1 lecture, maximum 3 lectures in a day. We will have that schedule once you join us. And there will be workshops towards the end of the program so that you understand question selection. How do you avoid tricky questions? How do you play with those data interpretation? How do you kind of solve those reading comprehensions which are a little clumsy? So all this strategy will be taken care by me. Along with that, we are giving you some 7 mocks and previous 8 year question papers with solution. Mocks can help you to have an in-depth analysis. Also, mentorship will be available along with GDPI preparation. So this can be a motivation for you कि यार you're buying this program, but in this program we are giving you GDPI also, so that even if you get a call from IFT Kolkata or let's just say IFT Delhi, you will be mentored and hand-holded by C2C mentors. So guys, that's it from my side. I hope this clears all your doubt as far as IFT is concerned. There will be a couple of more videos I'll be putting in on IFT Delhi, on IFT Calcutta, and also the strategy for IFT. So guys, kindly subscribe to my channel if not. And that's it from my side, guys. Thank you so much for watching this video. If you want to join us, the link is given in the description. You can join us. We start from tomorrow. Thank you so much, guys.